I, Ankit Kumar, on behalf of MCR HRD IT, would like to welcome you all again in this valedictory ceremony. I would also like to take this opportunity to congratulate all the officers who have won accolades in diverse fields today and in the presence of Honorable Vice President on Civil Services Day. अपने आगामी सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले इस शुभ संध्या में आज जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं। श्री श्रीनिवास आर कतिकथाला सर, IAS, निदेशक लबासना। श्री हरप्रीत सिंह सर, IAS, महानिदेशक MCR HRD IT। श्री बेनूर महेश दत्त एका सर, IAS, अतिरिक्त महानिदेशक। श्रीमती अनिता राजेंद्र मैम, IAS, संयुक्त महानिदेशक। डॉक्टर के तिरुपतैया सर, IFS रिटायर्ड, मुख्य सलाहकार प्रशिक्षण। श्रीमती दिव्या पारमार मैम, IAS, पाठ्यक्रम निदेशक। डॉक्टर आर माधवी मैम, सहयोगी पाठ्यक्रम निदेशक। डॉक्टर के उषा रानी मैम, वरिष्ठ संकाय। अब बिना विलंब किए इस रंगमंच के कार्यक्रम की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। Our first performance of the day is the Vande Bharata Mataram, which is led by Srimati Deepika Reddy. Srimati Deepika Reddy's journey in dance started 5 decades ago. She is recognized as an accomplished performer, a creative choreographer, a cultural ambassador, and a dedicated guru. She has been groomed by the legendary guru, Padma Bhushan awardee Dr. Vempati Chinna Satyam. Srimati Deepika Reddy is the recipient of the prestigious National Sangeet Natak Academy Puraskar for her contribution to Kuchipudi. She is also the recipient of Telangana Government State Award, Kala Ratna Andhra Pradesh Government State Award, Nitya Chudamani, Natya Kala Sarthi, Vani Kala Sudhakara, Akineki Nageswara Rao, Swarna Kanakam, Devdasi National Award, and many more. She was a member of Regional Film Censor Board, jury member of Nandi State Film Awards, and former chairperson of the Cultural Committee of the International Children's Film Festival. She has also received rave reviews after TED Talk, Divine Form of Expression, and Indian School of Business. Now, I request Srimati Deepika Reddy, her performance Vande Bharata Mataram. संस्कृति धारिणी सर्वदेश
जनैर्मल्यां वन्दे भारतमातरम् नाट्यादिकवयदुष्टां श्रेष्ठसंस्कृतिधारिणीं सर्वदेश जनैर्मल्यां वन्दे भारतमातरम् वन्दे भारतमातरम् वन्दे भारतमातरम् वन्दे भारतमातरम् शिवताण्डवलीलाढ्यां शिवालास्य विभास्वरां कलाविलाससौन्दर्यां वन्दे भारतमातरम् वन्दे भारतमातरम् वन्दे भारतमातरम् भरतेन महात्मना अभ्यर्हितां कलागेहां वन्दे भारतमातरम् नृत्यकलाविलासेन भरतेन महात्मना अभ्यर्हितां कलागेहां वन्दे भारतमातरम् वन्दे भारतमातरम् वन्दे भारतमातरम् जीवयन्ती जगत् सर्वं कलादीपैर्महोज्ज्वलैः सर्वकलालयां देवीं वन्दे भारतमातरम् जीवयन्ती जगत् सर्वं कलादीपैर्महोज्ज्वलैः सर्वकलालयां देवीं वन्दे भारतमातरम् वन्दे भारतमातरम् वन्दे भारतमातरम् हिमाद्रिमकुटं शीर्षे समुद्रं भुक्त्वा नृत्यरतां देवीं वन्दे भारतमातरम् हिमाद्रिमकुटां शीर्षे समुद्रं भुक्त्वा नृत्यरतां देवीं वन्दे भारतमातरम् वन्दे भारतमातरम् वन्दे भारतमातरम्
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शान्तिः। Takku Veni Manaku is a melodious piece with pulsating music composed and written by renowned poet from Telangana, Ramadasu, an ardent devotee of Lord Rama. Here, the poet enthusiastically praises the Lord, saying that we lack nothing if the Lord is with us. We have faith that the Lord Vishnu has donned 10 incarnations, thus Avatar Rama, for the benefit of mankind and to restore the righteousness. And in fact, and annihilate evil, adharma. The 10 incarnations of Vishnu are Matsya, Karma, Varaha, Narsimha, Vamana, Parsurama, Rama, Balrama, Krishna, and Kalki. The upcoming piece is choreographed by Srimati Deepika Reddy, and Deepika Reddy herself and the participants are Rutvika Nalamalapu, Harita Chaudhary, Darshana Murlidhar, Siddhi Kamakshi, Chetna Buddhiraju, and Sri Lata Kasini. In addition to this, lighting has been arranged by Basar Varaju and makeup is done by Sudarshana. I would like to invite the group with their next performance, please. భగవంతుడు తన చక్రధారియై చింతనియుండగు ప్రక్కరాడుగా భగవంతుడు తన చక్రధారియై చింతనియుండగు తక్కువేమి మనసూరాముందు కరుణువరచు తక్కువేమి మనసూరాముందు కరుణువరచు మత్స్యమూర్తి మన సాక్షండగు మత్స్యమూర్తి మన పక్షండగు తక్కువేమి
మనకు రాముడొక్కడు వరకు సురల కొరకు నందరగిరి మోసిన పూర్వతారుని కృపమనకుండగ సురల కొరకు నందరగిరి మోసిన పూర్వతారుని కృపమనకుండగ తక్కువేమి మనకు రాముడొక్కడు వరకు దురాత్ముడవు హిరణ్యాక్షుద్రుంచిన వరాహమూర్తి మనవాడైండగ దురాత్ముడవు హిరణ్యాక్షుద్రుంచిన వరాహమూర్తి మనవాడైండగ తక్కువేమి మనకు రాముడొక్కడు వరకు కసిపుని ఇరు చక్కలుగా పరచిన నరహరి ప్రక్కనుండగ హిరణ్య కసిపుని ఇరు చక్కలుగా పరచిన నరహరి ప్రక్కనుండగ తక్కువేమి మనకు రాముడొక్కడు వరకు స్వర్గముని పొందుగలిచిన రామనుంజు మనవాడైండగ భూమి స్వర్గముని పొందుగలిచిన రామనుంజు మనవాడైండగ తక్కువేమి మనకు రాముడొక్కడు వరకు క్షత్రియులను దండించిన పరశురాముని దయమనకుండగ ధరలో క్షత్రియులను దండించిన పరశురాముని దయమనకుండగ తక్కువేమి మనకు రాముడొక్కడు వరకు దండించిన దశరథరాముని దండించిన దశరథరాముని దయమనకుండగ తక్కువేమి మనకు రాముడొక్కడు వరకు నందుదయించిన బలరాముడు మన బలమైండగ ఇలలోయదుకుల నందుదయించిన బలరాముడు మన బలమైండగ తక్కువేమి మనకు రాముడొక్కడు వరకు కంసుని గురించి భక్తి శ్రీకృష్ణుడు మనపై కృపగాండగ దుష్ట కంసుని గురించి భక్తి శ్రీకృష్ణుడు మనపై కృపగాండగ తక్కువేమి మనకు రాముడొక్కడు వరకు కలియుగాంత్యమున కలిగిన దైవము కలిగి మూర్తి మముగాకుచుండగ కలియుగాంత్యమున కలిగిన దైవము కలిగి మూర్తి మముగాకుచుండగ తక్కువేమి మనకు రాముడొక్కడు వరకు రామదాసునిల రక్షించదలని ప్రేమతో కలిపిన ప్రభుతండగ రామదాసునిల రక్షించదలని ప్రేమతో కలిపిన ప్రభుతండగ రామదాసునిల రక్షించద
జనని ప్రేమతో కలిపిన ప్రభుతం రామదాసునిల రక్షించదనని ప్రేమతో కలిపిన ప్రభుతం తక్కువేమి sharing their art with us and keeping the heritage alive with their performance. Our next program is the presentation of play Paiban by Kshitij Saxena, who has also directed this play. In AK Sena 1 Act play, 212 officers of Central Service Service and All India Service participated, along with that of Military Engineering Service. And they presented and coordinated for 11 such acts. Now I request Shri Kshitij Saxena to please come up on the stage, explain his act and also present in front of the audience, please. Respected Chief Guest, respected Director Sir, Sir, and all my dear friends, very good evening to all of you. Now, with the permission of the Chair, we would be screening the play Paiban, which is in Hindi and has a running time of about 20 minutes. As the director of the play, I would like to give you a brief intro about what went into making of the play and what it is all about. I would like to begin with the words of Oscar Wilde, and I quote, "I regard theatre as the greatest of art forms, the most immediate way in which a human being can share with another the sense of what it is to be a human being," unquote. I directed a play titled Paiban, showcasing the life of a young girl who was sold at a very young age. The play, in a way, tried to explore the dark underbelly of our society and highlighted the havoc that prostitution causes to its victims. Firstly, delving into the meaning of the word, many people ask me about the meaning of the word many times. And Paiban actually literally means a small piece of a cloth which is used to mend a cloth which is torn. So it can be interpreted in two ways. One, that is, it can be said that prostitution is like a blot on the fabric of society. In another way, as you will see when the play is screened, that the central character of the play, Piran, tries very hard to mend all the relationships that she has in her life, with her son, with her husband, with her father, but she tries her best, but ultimately she fails. You see how. My experience of directing the play was nothing short of amazing. Ours was a dedicated group of 22 people, with each one playing a very pivotal role in the final act. Here you will see 20 of them on screen. One whose voice you will hear in the starting, the narrator, and in between is Ahmed Bilal. The other one, our stage setup, lights, sounds, was very ably managed by Agrim Saini. And I feel that audience is very seldom aware about the complexities of what goes on behind the stage. Generally, people see only what the actors do. I feel that it is as important as a protagonist in the play. You will, I hope you see it. And I feel that as an art form, theatre is the best medium to bring people in a group closer. As a director, I could closely interact with each one of my teammates and saw them bring our characters to life. This process in itself was profoundly enriching. After every practice, I could see that people used to shed their inhibitions and closely connect themselves to the play. And nonetheless, through the course of our practices, we developed bonds that are long-lasting. It is quite ironical that while we are presenting a fictional world on stage, the actors tend to aspire to bring the truth on stage. They want the audience to connect with them, and I felt very happy that the audience could connect to our play, and that is what I think was the biggest satisfaction for us. And finally, I feel that AK Sena one act play is among the most important parts of the FC. We are but different cogs in the wheel of governance of India, and I feel that mutual trust and confidence among us is very important.
and I feel that in my experience, this play did more to further that objective than any other exercise in the FC in my limited experience. So I hope that the audience enjoys the play, and while it has been performed here live in front of many of you, I hope that you re-enjoy that experience as well. Thank you so much. इस मृत शरीर को मुखाग्नि कौन देगा? मृतक का एक बेटा था, आता ही होगा। अरे जरा जल्दी कीजिए, वैसे भी यहाँ आ नहीं रहा था और खुद की बेइज्जती भी हो रही है। अगर विलम्ब हो तो आप खुद देखिए। मृतक का बेटा है, कम से कम 2 और लोगों का प्रबंध कीजिए मिट्टी लाने के लिए। मिट्टी लाने में शमशान नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं माई को बस एक बार देखने आया। फिर तो मैं बहुत पहले छूट चुका। लेकिन वो लोग कहाँ हैं जो दिन रात कोठे पर भिनभिनाते रहते थे मक्खियों की तरह, जिनके साथ उन्होंने पूरा जीवन गुजारा? वो लोग नहीं आते हत्ती उठाने? क्यों आएंगे वो लोग? वैश्या की देह में सबको दिलचस्पी होती है, सबको गरम जोश चाहिए होता है, और ये तो ठंडी पड़ चुकी है, योजने को मांस तक नहीं बचा है। हाँ, वो दौर आया था जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था। बाजार सजे हुए थे, कोठे पे रौनक थी, और पीरन के चाहने वाले लाल टपकाते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इतना क्या शर्माना है? यहाँ तो सब बेसलम है। कौन चाहिए तुझे? पहली बार है यहाँ का, पीरन से बेहतर होगी क्या? नहीं है पीरन को। चलो आज जरा पहले कुछ बात कर लें। चलो मौसी, हमें भी तो कहीं की चटनी चटा दो। क्या बताओ, क्या बात कर रहे हैं? बस ऐसे ही कुछ। देखो, उसके बिना करना हो तो नहीं होगा। नहीं, उस बारे में बात नहीं करनी है, बस कुछ बात कर लीजिए जिससे इत्मीनान हो जाए। जैसे जैसे आप इस धंधे में कैसे आए? मेरा वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से फारिग हो और निकल जाओ। जी माफ कीजिए, इतनी जल्दी मैं नहीं कर सकता, कुछ बात ही कर लीजिए। अरे हर दूसरा आदमी यही पूछता है। बताते बताते तो मुझे आदत हो गई है। मैं और मिशन खेल रहे थे ऐसे ही गिल्ली डंडा, गाड़ी किसकी थी इसमें से झगड़ा हुआ था। मैं खेल रही थी, अब मेरी गाड़ी है। अब मेरी बारी है, हर बार तुम्हारी बारी क्यों होगी? तुम ना हर खेल में बेईमानी करते हो। अब गिल्ली भी इतनी दूर फेंक दी, मुझे ही लानी पड़ेगी। उस दिन पहली बार गांव में मैंने किसी कोट पैंट वाले आदमी को देखा था। एक पल रुकी और फिर खेलने में मस्त हो गई। बापू बापू। राम राम सरकार। राम राम। देखो, हमें आए बिल खोलनी है, उसके लिए हमें मजदूर चाहिए। पैसे की चिंता मत करो, प्रतिदिन 20 रुपए मिलेंगे। 20 रुपए तो कम है सरकार, घर में बीवी है, बिटिया है, इसमें तो खाने का भी नहीं होगा। अरे क्या हुआ, जितने लोग काम करेंगे उन लोगों का खाने का हो जाएगा। तुम अपनी बीवी को भी ले आओ, पैसे वह भी कमा लेगी। बाकी तुम्हारी बिटिया को मैं शहर ले जाऊंगा, वो कढ़ाई बुनाई का काम कर लेगी।
समझ तो दूर है साहब, अगर कुछ बनाना मिल जाता तो तसल्ली होती कि बिटिया का काम रखेंगे और बिटिया वापस भी आएगी। 300 रुपए बयाना ठीक रहेगा? जी सरकार। वैसे तुम्हारी बिटिया काम करने लायक है, इसे चाचा पैसा नहीं है मैंने अभी तक। कहीं ऐसा ना हो दुश्मन बोझ बन जाए। धीरे धीरे देखो सरकार, एक भी आंसू नहीं गिरे इससे। यूं तो तुम मिल में काम करने के लिए रुकी थी ना, तो फिर इस धंधे में कैसे? मेरा मतलब वो पहली बार वो। अरे वो क्या कर रहे हो? आराम से पूछो। बिस्तर के सफरनामे की पहली शुरुआत कैसे हुई, यही पूछना चाहते हो ना? जी मेरा मतलब वही था। सच बताओ तो मुझे याद भी नहीं। पूरा दिन मिल में बेगारी करती थी। पैसे तो नहीं मिलते थे। अरे पैसे तो नौकरों को मिलते हैं, गुलामों को कहाँ। हाँ लेकिन खाना मिलता था बचा कुचा। मिल से घर जाती थी तो मालकिन के पैर दबाती थी। मालकिन से छुट्टी मिलती थी तो मालिक के पास जाती थी। पूरी रात रौंदा का समय, कोई छुट्टी नहीं। उस वक्त मैं इतनी कच्ची थी कि मेरी महारानी भी नहीं आती थी। इस सब का तो मतलब भी नहीं समझती थी मैं। मालिक के साथ सोना और मालकिन के पैर दबाना, इसमें मैं कोई फर्क नहीं समझती थी। हाँ बस इसमें दर्द बहुत होता था, बहुत ज्यादा। एक 9-10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म? दुष्कर्म ऐसे कह रहे जैसे कोई यज्ञ किया उसने। अच्छा बताओ, तुम आज कौन सा दुष्कर्म करना चाहते हो? माफ कीजिए, मैं चलता हूँ। शबा है। इस कठोर जिंदगी के बंधन में हुआ को और रोज का खाना सुनना पड़ता था। अरे क्या किया तुम लोग? नहीं मसला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। चुप कर मेरा, एक तो गलती की, ऊपर से सफाई देना है। बाबा बढ़ेगी तो हम काम करते हैं। और तुम्हारा? अरे तो इसका शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। जब तुम्हारी माँ को पता लगेगा तो क्या गुजरेगी उससे? वैसे करती है तुम्हारी माँ। अच्छा क्या जगह की बात हो रहा है तुम्हारे? नहीं मैं मास्टर साहब, मैंने तो कहा जा, तुझसे बातें बात करते हैं। हराम जाने का मतलब जानता है? हराम की पैदाइश। अरे तो क्या गलत कहा था उसने? तुझे तेरे बाप का पता है? पता नहीं कितनी रातें तेरी माँ ने रखी करने की कोशिश करता हुआ, मगर में कैसी बातें कर रहे? चुप कर। अब जबान लड़ा के हराम जान की सब जगह मेरी तरफ क्या देखना है? एक तो ऐसे ना है जैसे मैं तुझे 2 मिनट की जान बना दूंगा। चल दबा यहाँ से। पैसे पहले देने पड़ेंगे, मौसी के पास लेके आना। अरे दे दिया मेरी जान, बस अब तू आ जा। चल कमरे में चल। कमरा मत बोल रानी, जन्नत लिए जन्नत। चल अरे कहने तो उतार दे। भाई आप पीना बनाए, पीना है तो बाहर जाके पी क्या? कपड़े उठा दे नहीं, और जो मेरा माहौल बनाए गाना चुप बदतमीजी मत कर। चुप ना साली। मेरा जो बनाएगा जैसे बनाएगा मैं वैसे करूंगा। पैसे दिए मेरी मौसी को। पैसे दिए मतलब खरीद लिया तुमने? अरे 1 घंटे के लिए तो खरीद ही लिया ना। मेरी बीवी की तरह करना होता तो घर जाता। वैश्या है तो वैश्या, वही काम कर। चल अरे आज तो चलो कमरे में। नहीं, आज भी बात करना बेहतर मालूम होता है।
जैसे तुम ठीक समझो। वैसे भी जबरदस्ती करूंगी तो बलात्कार कहलाएगा ना। मैं फिर से आपकी पुरानी जिंदगी में दखल दूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? बुरा तो नहीं मानूंगी, लेकिन फिर से वही याद है। खैर पूछो जो पूछना है। आपका कभी निकाह, मेरा मतलब शादी हुई थी? पक्की उम्र की हुई तो मालकिन ने मेरी शादी करा दी थी। उसी से हुआ है मेरा लड़का हरुआ। इतना नन्हा सा प्यारा सा था ये, लेकिन उसी पति ने मुझे इस मौके तक पहुंचा दिया। साला पूरा दिन दोस्तों के साथ जुआ और नशा करता रहता था। दीदी बात भाई भाभी, एक हफ्ते के लिए था। मैं ये सब नहीं पीती, आप लोग पीजिए, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। अरे जा रही हो भाभी, हमारे पेट भरे, बस थोड़ी प्यास लगी थी जो बुझाने आए हैं। थोड़ी शराब बुझा देगी, थोड़ी आप। ये कह क्या रहे हो? तुम देख क्या रहे हो? ज्यादा नाटक करकर जबरदस्ती की पकड़ बन रही है। आज के बाद किसी और मर्द के साथ सोई नहीं क्या? देख ना नहीं कर पाई ना तू, ना नहीं कर पाई ना। अरे मैं तो स्वाद रात के दिन ही समझ गया था, एक कतरा खून नहीं था चक्कर में। अभी तक उसके मजे में लेकर चाहिए, आज मेरे विचार के लिए करते। चल पकड़ी बात है। क्या शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा कहते हुए? नहीं आती है शर्म। तेरे बच्चे को भी मार डालता हूँ, वैसे भी मेरा तो नहीं होगा ना। क्या? नहीं बच्चे को नहीं। 9 महीने में हम ज्यादा पूरी पता नहीं किसी और का पाप का तेरे कोप में नहीं मुझे फंसा दिया। क्या है ना? चल करने दे, पर हाँ एक साथ नहीं, एक करके। अरे सोबली, आज बड़े दिनों बाद अपने संग में आ गई, क्या बात है? क्योंकि हलवा के लक्षण ठीक नहीं लग रहे बीरन। क्यों? ऐसा क्या किया मेरे हलवा ने? कल पनवाड़ी की दुकान पे देखा था मैंने उसे, और दारू के नशे में पूरा आवारा लड़कों के साथ घूम रहा था। मौसी तो कह रही थी कि वो किसी दूसरे कोठे पे भी गया था। क्या? मेरा हलवा भी? अरे रोज क्यों भी जा रहा है कि मैं लक्ष्मण सिंह के वहां काम करने जा रहा हूँ। भाई वो हमारा जौनसा देखिए क्या बड़ी धूप लगती है ना तुम्हें, बड़े काम होते हैं लगाम पे। बेशरम, लगाम नहीं लगाएगा तू? ये क्या कर रही हो माँ? और नहीं तो क्या, सुबह सुबह बड़ा ढोंग करता है। लक्ष्मण सिंह का बेटा हमें झूठ कैसे मारता है? अरे मन कितने महीने हो गए गए नहीं है तू वहां पे। बचपन में स्कूल भेजा तो मास्टर की डांट से सही नहीं गई। अभी इतनी मेहनतें करके तुम्हें काम दिलवा दिया तो वो भी नहीं कर रहा मुझे। क्या कर रहा है तू? बोले रहिए यहाँ घर चलाता हूँ, तुम्हें पालता पोसता हूँ मैं। तू मुझे पालता है, तू मेरा पोष रहेगा। चंदू बनाने की नजर से मैं एक समाचार नहीं दूंगी। अरे तो गलत क्या मैंने? इंसान लोगों को परिवार में बचपन से सिखाया जाएगा। यहाँ हर रोज हर रात 10-15 नए मर्द आते हैं, मैं किसी दूसरे कोटे में चला गया तो क्या गलत किया मैंने? और वो तुम्हें लगता है कि जूते की वजह से हम लक्ष्मण सिंह के घर के काम नहीं करते? रोज अपने और अपने दोस्तों के साथ बैठ के मुझे तुम्हारे साथ गुजारी हुई रातों के बारे में बताते हो। उसके फोन में पूरा एक फोल्डर है तेरा भाई। अरे एक फोटो वाली वीडियो मुझे बार बार दिखाता है। तू करेगी ऐसे काम, ऐसे करेगी बात तू क्या? आज के बाद तेरा और मेरा रिश्ता खत्म समझी? नहीं होगा, नहीं। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मेरे जीवन में मुझे नहीं था, तो बाकी सबकी तरह मुझे छोड़ के चला गया।
मेरी गलती थी, मेरी गलती थी, है ना? बचपन में बापू के सिर पे बोझ दी है, शायद इसलिए उन्होंने मुझे बेच दिया, पर फिर भी अपने दिल को दिलासा देती हूँ मैं, ये सोचकर कि बापू के घर में मेरी कीमत कम से कम 300 रुपए की तो थी, और मेरे पति मेरे कितनी परेशानी में थे। उस रात, उस काली रात, शायद उनके दोस्तों के साथ सोकर मैं उनके कुछ छोटे से बड़ी पहचान होंगे। उनकी पत्नी होने के बाद इतना तो मैं कर ही सकती थी, पर उसके बावजूद भी मैं उन्हें कुछ न कर सकी, इतना कुछ करके भी मैं उन्हें कुछ नहीं कर सकी। हाँ, मेरा बेटा हुआ, मेरा प्यारा हुआ, वो एक सबसे बहुत दूर था, बहुत कोशिश की मैंने, बहुत कोशिश की, पर मैं उसे इस दर्द से बचा नहीं सकी। बहुत मुझसे गया है घर छोड़कर। आज भी उसकी कभी एक पहली बार मेरे मन में तीर की तरह उठती है। इस दुनिया में किसी भी इंसान ने, किसी भी इंसान ने मुझे इतना दर्द नहीं दिया जितना मेरे बेटे अल्लाह की पहली बात ने दिया था। बस मुझे जिससे मैं जिंदा लाश की तरह घूम रही हूँ। मौत तो मेरी कब की हो चुकी है, और तो बस इस पूरी दुनिया की तरह इस शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मुझे कितना कचोटती है, जैसे मैं एक कीड़ा बन गया हूं, देखने वाला है घिनौना कीड़ा। मैंने अपने मां को क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं बोला अपनी मां। खिलाती है मुझे अपने आप से, जी में आया कि मैं खुदकुशी कर लूं। लेकिन मैं कायर नहीं हूं, लोगों की बड़ी नजरों से मुझे बहुत डर लगता है, बचपन से डर लगता है। बहुत याद आती है माँ, मेरी माँ मुझे वापस कर दो। Now I would request Director Lavasna sir, DG sir, MCHRD and ADG sir to please felicitate Deepika Reddy's group sir for the performance that they have done sir. Namaskar. It's indeed a great pleasure for me to be here at MCR HRD and perform before the eminent dignitaries on the dais now. We have Srinivas ji, Director Lavasna, the Director General and all the other eminent dignitaries. Actually, I'm here because Hari Krishna Garu, Director Language and Culture, Government of Telangana, who's like my younger brother and has high respect for artists. He invited me exactly 2 days back to come and perform here.
And the last 2.5 years has been very stressful for all of us because of the pandemic, and the performances were all virtual. My students have been dancing, but since I have senior citizens in my house, I was refraining and only doing virtual performances. So this is the first performance, the live performance I'm doing after. And so Hari Krishna Garu was, he pushed me to do it. And when I came to know that Harpreet Garu is heading this institution, he is an officer who's brought dignity to every post he's, held. I know him as a parent. We were co-parents on the Chirek board. But then when he was in Raj Bhavan also, we used to meet very, very often, and very humble officer. And he put Srinivas ji also and all the other dignitaries, and awesome. So it's a great pleasure. And then the very fact that the performance is a valedictory function for the young officers who are going to embark on this important journey of serving our nation, that made me immediately say yes for this performance, and wishing all of you a great future, and please respect our culture, our arts, whichever part of India you are, because if artists are respected, and it's always all the kingdoms in our past, all the rulers, they respected artists, they were shining. So Bharata Mata, today I did this item just for all of you because you are going to serve our nation. Thank you so much for this opportunity. And my team from Deepanjali, all of them, Rutvika, Harita, Darshana, Siddhi, Chetana, Srilata, on behalf of all of them, I thank Mamidi Hari Krishna Garu and Harpreet Singh Garu and the entire team for this wonderful opportunity. Sarve Jana Sukhino Bhavantu. Thanks a lot, Deepika ji. We have met several times as parents. So I have met when I was in Raj Bhavan, she had performed. And she is an exquisite dancer. She comes from a very respected family of Telangana, extremely well respected family. Her children are in USA, and still she respects us, respects the officers. Thanks a lot, Deepika ji, for coming. I'm really honored. A dance performance called Bharatiyam. The idea of India is a complex one with baffling diversity. The difference in culture, languages, belief systems, and art forms are stark. And yet, there is an infallible spirit that unifies the multiple manifestations of indigenous cultures in India. And the Bharatanatyam of Tamil Nadu shares the same dynamism and temple moorings of Telangana's Perin. The combination of the courtly and devotional fervor can be seen in North India's Kathak and coastal Kerala's Mohiniyattam. The principle of Bhav, Rag, Tal animate all these dance forms hailing from different regions of India. This is the essence of Bharatiyam. Bharatiyam is a crisp production that initiates audience into the forms of Bharatanatyam, Perini, Mohiniyattam, and Kathak. In fact, this particular dance form is a combination of all these four dance forms, and for each dance form we have a specific guru who would be performing individually on each of the pieces, and then there would be a Jugalbandi at the end. So this complete performance has been conceptualized by Guru Pramod Reddy, who is the proponent of Bharatanatyam. For Mohiniyattam, the proponent is Guru Dr. Maithili Marat Anup. For Kathak, the proponent is Guru Pandit Sri Ravindra Raju. For Perini, the proponent is Guru Perini Pavan Kumar. Now I would like to request the group to please come up on the stage and perform their art, please.
సంపూర్ణ మోహిని శృంగార రస సంపూర్ణ మోహిని జం
అభివందనం పలుకుదాం ధరణి జనులందరం ప్రణవమంతానికే ప్రాణమే భారతం జగతి సర్వానికే వేదనాద జీవధార చిరికిరదే వందనం మాతృజే వందనం हम करें तेरी आराधना शान तेरी बढ़ाए मान तेरा बढ़े वो हमारा सदा पुण्य भूमि
what we have just witnessed is the mosaic of 4 classical forms woven into a single thread of Bharatiyam. A big round of applause for the group. Now I request the 4 gurus to please come on the stage for the felicitation. I also request Director Sir, Labasna, DG Sir, ADG Sir, Divya Ma'am to please felicitate the group. May I invite all the 4 gurus and all the dancers also. Dr. Maithili Marat Anup from Mohiniyattam, Sri Perini Pavan and Sri Ravinder Rajkar on Kathak. I would like to call the dances. Mohiniyattam, Gopika, Megha, Sri Lakshmi, Manisha. They have done their masters from Kerala Kala Mandalam and they have done the dance course masters from Central University, Hyderabad. So for the complete Mohiniyattam team. And Dr. Maithili Anup is a research scholar and she did her PhD in the Indian Fine Arts relations. Thank you. Perini, Mansi Niharika, Surya, Srinartana. Bharatanatyam, Akshaya, Srikriti, Radha, Kriti. On Kathak, Manasa, Perini, this maybe Perini, Telangana, the Perini, Lasyam and Thandavam. You can see that you can see that from the Ramappa, that ancient Jayapa Senani, he has revolved, that Nataraj Ramakrishna has revolved this art form. Manasa, Dhavalika, Shriya, Veda, and on lighting supported by Basavaraju. On behalf of our team, just I would like to give a big round of applause from our side to Mamidi Harikrishna Garu, Director, Department of Language and Culture. Was, I can say, the cultural ambassador from Telangana. Thank you very much for giving opportunities. And on top of this, I would like to give a from all of us, thank you very much to the Director General Sir and who gave this opportunity to showcase this the small piece. We have, like, in the 2 days we prepared just for 20 minutes in front of you, for giving this opportunity for this entire team who supported here. Thank you very much. Give a big round of applause from our artist side. Thank you. At the end of this cultural program, I would like to express gratitude to the esteemed dignitaries and eminent administrators of the country, fellow officer trainees, cultural secretary, guests for their august presence. The day can't be concluded without expressing gratitude to all the proponents and artists of the day. Thank you for keeping our heritage alive and going. Now, on behalf of MCR HRD IT, I invite everyone for the DG's dinner, please. Thank you.